If you have any kind of queries related to the session, you can ask now, because once the session will started, all the Q&A will be taken at the end of the session. And if anyone can switch on their camera, they can. The session will look interactive. Hello Ayana, hello Kalash, hello Parveen, hello Sia, hi Bijoy, hello Manash, hi Nilesh, hello Ruzal, hi Urvashi, Vikram, hi Raghav, hi Nishant, hi Anish, hi Rohit, and we have Mehak, hello Kanika, hi Arpita, hi Mukesh, hi Rashi, hi Shinu, hi Anmol. Uh, thank you so much for coming, and we have the speaker with us. Hello, Padmini. We'll start the session at 7:05. Oh, sorry, 5:05, so that the attendees can join. Yeah, Okay. sure. No issues. Bijoy is saying, tell us something about the speaker while we are waiting. I don't know much about her. Bijoy, be patient. We'll introduce our speaker. Don't worry. At 5:05, then we'll start the session. Okay. Yes, yes. Do you have? If you have any kind of questions, you can write in the chat section. We'll take it from there. Please try to come with your original name, as we have already mentioned. Animal Love. Uh, can you come with your original name? Because it is in our guidelines to not let anyone in if you're not joining. Okay. Thank you so much for understanding.
Yes, everyone, only 1 minute left. If you can switch on your camera, then it will be great to make the session pretty interactive. As Aman has already switched on their camera, and I also, I would highly encourage if anyone can switch on their camera, they can. Oh, great colors. Thanks, Vikram. Great, Rishika. I'm feeling happy that so many have switched on the camera. It's great. Now, as it's time, let's welcome our esteemed speaker of the day, Miss Naga Padmini. She has a diverse experience in many fields. Let's starting. Uh, she has been a business growth specialist at IT Sphere Hub and Flipkart Grade 5 Season 5 finalist and previously ecosystem growth intern at the Graph Protocol. So today she'll be sharing her insights on Web3 and will also share about the opportunities that exist in the Web3 space. So without any further ado, let's welcome our speaker of the day. Over to you, Padmini. Thank you so much, Manik. Am I audible? Yes, you're audible. Yeah, sure. So, thank you so much for introducing me and giving me this wonderful opportunity to present myself and present in front of so many people. So, I hope everyone is doing great on the weekend. Like, first of all, thank you so much that you people have you have come here on the weekend, especially at this hour. So, how are you all? You can just uh, show your enthusiasm with emojis or in the chat box. It's open for you. Pretty good. So, I just request you all to be very interactive throughout the session so that I can, guide you properly. So, yeah, today we are going on an adventure into the future of internet, which is Web3. So I'll just introduce myself again, even though Manik has done. So I'm Naga Padmini, and I have worked as an ecosystem growth manager at Graph Protocol, which is a Web3 company. And also, I'm a final year student at NIT Hamirpur, and currently I'm majoring in electronics and communication engineering. And my college is in Himachal Pradesh. And for the next 1 hour, I'll be a guide on this journey. So don't worry, we will make it kind of fun and exciting. So, Manik, can I just have the PPT? Yes, sure. Rishika, can you present the presentation? Yeah, sure. Yeah, sure. Till she is presenting everyone, you can tell us from where you are joining, from which part of India. Rishika, you can switch into the full screen mode. Yeah, sure. Wait. Oh, wow, Bijoy is from Kolkata. Okay. Great. Yeah, pretty good. Chandigarh, Punjab, Avish, that's great. Dubai, Dubai? oh my God, we have international attendees here. That's great. My God. I didn't expect this much actually. I didn't, but still, I have shared about this event like Yeah. a lot. Oh, Himachal Pradesh. We have Sahil. Neighbors, bro. Is it visible? No, not Screen, yet. I mean, presenting. It's visible. No, no, no. It's not visible. Yes, now it's visible. Now it's visible. Can you just zoom in a bit if it's possible? So, like enough full screen mode. At the bottom right, there is a full screen button. You can see in the screen. Yes, just click on Yeah. it. Yes, that's great. Yeah. To the next slide, please. Okay, so I guess everyone is ready, right? Okay, let's start. Okay. So before I get into everything, so let me take you people back in some time. Okay. So imagine the
early days of internet. You remember when connecting to the internet was like वो irritating dial-up वाला sound, beep 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 करके जो आता था, and that was particularly the web one. जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हो, there were some static pages at that time जो एकदम पूरा silent और बहुत ज्यादा boring. It's just like static pages, जैसे कि एक online encyclopedia. जो भी information है, that is written there, and you have to only read, and you can't do anything from that. And इसके बाद we had web 2 that have came along. Social media, YouTube, Facebook, Insta, etc. and etc. So वहाँ पे हमने अपने पेट के वीडियो शेयर किए हैं, लाइक मीम्स बनाए, रील्स बनाए, कितने सारे फॉलोअर्स गेन किए हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट इंटरैक्शन. ये इंटरनेट थोड़ी फिल्मी सा बन गया था आफ्टर कमिंग इनटू द वेब 2 स्पेस. बट नाउ बीइंग इन 2024, इट्स द एरा ऑफ वेब 3. और ये तो एकदम नया एंड द फ्रेश पर्सपेक्टिव आई वुड से. Web3 is all about giving the power back to the users. मतलब आप लोग अपनी खुद की स्टोरी के हीरो बन सकते हो rather than depending on someone else. So like थोड़ा और flashback में जाते हैं to get a better understanding of things. So basically Web 1 was like those old black and white TVs. You remember? जो एंटीना लगे होते थे, छोटू सा डब्बा, वैसे वाला काइंड ऑफ थिंग. या एकदम स्टैटिक सब कुछ, मतलब इतना ज्यादा एक्साइटमेंट ही नहीं होता था उस चीज पे. एंड देन वी हैड द era of web 2 which was like the color tv, सब कुछ very vibrant, interactive and very much addictive I would say. But now web 3, it is like the 3D IMAX जैसा experience I would say. It's not about just watching, but it's also about interacting. It's also about the owning a part of the internet. सोचिए like imagine you just don't use a platform but you own a piece of it. ये सच में एक्चुअली एक बहुत बड़ी बात होती है. सो नाउ यू माइट बी थिंकिंग वेब 3 तो सुना है, बट ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? वेल, लेट मी टेल यू. सो वेब 3 इज जस्ट नॉट अ न्यू वर्जन ऑफ द इंटरनेट. इट्स अ न्यू माइंडसेट, like a new perspective. It's kind of all about decentralization. So, like Web3 is already shaking up things in finance, art, gaming, and many more fields. तो ये तो कहीं ना कहीं हम सबको इम्पैक्ट करेगा ही, और बहुत ज्यादा इन अ गुड वे. सो कैन आई जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड? या सो अभी चलते हैं लाइक द मेन फाउंडेशन ऑफ वेब 3 विच इज ब्लॉकचेन. अभी ब्लॉकचेन का नाम तो सुना ही होगा कहीं ना कहीं, इवन दो यू डोंट वर्क ऑन इट. बट लेट्स डिकोड इट इन अ वेरी सिंपल टर्म्स. तो आपको लिंक लिस्ट पता ही होगा, राइट? पढ़ा होगा कहीं ना कहीं डीएसए वगैरह में. तो लिंक लिस्ट बेसिकली होता क्या है? एक नोड से तुम दूसरे नोड को कनेक्ट करते हो एंड द नोड हैज द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट वन, राइट? नेक्स्ट और द प्रीवियस वन. सो दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू ब्लॉकचेन. तो बेसिकली जैसे आप यहाँ पे पिक्चर देख रहे हो, ब्लॉकचेन के मेजरली 3 कंपोनेंट्स होते हैं. वन इज डेटा, द अदर वन इज हैश, and the next one is hash of the previous block. So basically data is anything that you want to store, मतलब वो कुछ भी हो सकता है. And hash is basically kind of the address of the block I would say. जैसे तुम normal terms में address बोलते हो, but when it comes to the web3 space you call it a hash. तो वो it's like a 16 digit number or sometimes 32 digit number, and that totally depends on what kind of library you are using to create the hash. And अगर मान लो एक ब्लॉक को तुमने कनेक्ट करना है दूसरे ब्लॉक से, तो एक चेन बनाने के लिए हमें एक लिंक तो चाहिए थी, लाइक वी नीड अ लिंक, एंड दैट लिंक इज बेसिकली द हैश ऑफ द प्रीवियस ब्लॉक. तो जब एक चेन बनता है तो जो पहला सबसे ब्लॉक होता है जिसकी ओनली एक कनेक्शन होती है, दैट इज कॉल्ड द जेनेसिस ब्लॉक. कैन आई जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन? The next slide. Yeah. So to understand it in a very more similar way, so imagine you and your friends are playing a game of Monopoly. सबको पता ही है ना Monopoly क्या होती है, जो बचपन में खेलते थे वो गेम. या और जस्ट इमेजिन कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं सारे काम छोड़ रहे हैं, मतलब हर कोई चीटिंग कर रहा है. बट वहां पे एक ऐसा ऑनेस्ट सा बंदा है जो हर चीज लिख रहा है अपने एक मिनी डायरी में, सब कुछ नोट कर रहा है कि किसने कितना क्या कर रहे हैं, लाइक वो इज ओनिंग दैट लैंड या एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये सारी चीजें वो अपने नोटबुक में लिख रहा है. तो एंड वो इसलिए कर रहा है ताकि कोई चीटिंग ना कर पाए उस चीज से, मतलब उस गेम में. तो दिस इज एग्जैक्टली हाउ अ ब्लॉकचेन वर्क्स.
तो यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक अ ऑनेस्ट डायरी जो सब रिकॉर्ड्स को जो भी हमारे एक्टिविटीज होते हैं वो सब रिकॉर्ड करती है. बट हियर वी हैव अ ट्विस्ट इन दिस. सो बेसिकली ये जो हमारा डायरी है ये एक इंसान के पास नहीं होता है जैसे मोनोपोली के गेम में है. बट इनफैक्ट दिस डायरी इज शेयर्ड अमंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल एंड एवरीवन हैज इट्स ओन कॉपी. ठीक है, मतलब मेरे पास भी एक कॉपी है, मानिक के पास भी एक कॉपी है, रशिका के पास भी एक कॉपी है. तो अगर मान लो मैं कोई चेंज करना चाहती हूँ उस चीज में, तो इमीडिएटली क्योंकि सबके पास वो कॉपी है एंड इट्स रिकॉर्ड्स दी ट्रांजैक्शंस या जो भी, तो अगर मैं कुछ चीटिंग कर रही हूँ द रेस्ट ऑफ द पीपल विल गेट टू नो अबाउट इट. So this is the magic of decentralization, I would say. And basically, it's a digital diary that everyone can see and no one can ever change that. अगर तुम कुछ डेटा ब्लॉकचेन पे पुश कर रहे हो, that is immutable. तुम चेंज ही नहीं कर सकते हो. So like जो गया वो गया, वापस तो कुछ नहीं आने वाला है. So इसको like थोड़ा और प्रॉपरली समझते हैं. अब ये ब्लॉकचेन काम कैसे करता है, ठीक है. तो इमेजिन अ ब्लॉक एज अ पेज इन दैट डायरी. जो अभी हमने डायरी की डिस्कशन करी है उसमें एक पेज को आप ब्लॉक जैसा समझ लो. ठीक है, तो ईच पेज उसमें खुद के एक लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस है, कौन किससे कितना क्या ले रहा है, एवरीथिंग फ्रॉम ए टू जी. तो जैसे ही एक पेज फुल हो जाता है इट इज लिंक टू द प्रीवियस पेज. सो इट्स लाइक क्रिएटिंग अ चेन. जैसे ब्लॉकचेन के नाम में ही चेन है, तो विच काइंड ऑफ लाइक रिफ्लेक्ट्स की इट्स अ चेन ऑफ ब्लॉक्स ऑफ इंफॉर्मेशन. और ये वी हैव टू नोट दैट कि ये जो चेन है ये कभी भी टूट नहीं सकता है. कैन आई जस्ट हैव द नेक्स्ट स्लाइड. यहाँ तक किसी को कुछ डाउट? या आई जस्ट टेक अप द Q&A सेशन एट द एंड अगर कोई डाउट्स आते हैं एंड में तो. ओके, सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज व्हाट इज द मेन पिलर ऑफ अ ब्लॉकचेन. ठीक है, इट इज कॉल्ड द कंसेंट्स. अभी कंसेंट्स को बहुत सिंपल टर्म्स में समझते हैं. which is basically consents का मतलब ये होता है they are the fundamentals which are maintained in decentralized, secure and trustless nature of blockchain network. अब blockchain के दो main kind of systems होते हैं. One is proof of work and the other is proof of stake. Actually और भी होते हैं जैसे proof of authority and बहुत सारे होते हैं, but mainly people focus on proof of work and proof of stake. So you can just see a very good picture of this one. Now let's understand them individually. So I'll just give you an example. It's like imagine you're going on a treasure hunt. Okay, you're going on a treasure hunt and proof of work के case में अगर आपको खजाना ढूंढना है तो you'll have to solve a puzzle to get the piece of the key or the kind of the piece of the map that will lead you to the treasure. So which is basically like it's cracking a super difficult code to find the treasure. जिसने जल्दी सॉल्व कर लिया वो ब्लॉकचेन में ऐड हो जाएगा एंड अकॉर्डिंगली ही वुड बी रिवॉर्डेड. एंड दिस इज लाइक बिटकॉइन का नाम तो सुना ही होगा सबने. लाइक इट्स ट्रेंडिंग अ लॉट नाउअडेज एंड मे बी ऐसे लोग हो सकते थे जो ओन भी करते हैं बिटकॉइन को, अ पार्ट ऑफ इट. So like even Bitcoin works on this principle. It's like a race to solve the puzzles and ये puzzles they are like very complicated mathematical problems होते हैं जिनको it requires a huge energy and power to calculate them and produce the results. So it would be kind of like you would require a very big competition and hard work to win this race. अब आता है प्रूफ ऑफ स्टेक के बारे में. तो प्रूफ ऑफ स्टेक इज काइंड ऑफ अ बिट डिफरेंट फ्रॉम प्रूफ ऑफ वर्क. मतलब ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा है. एंड द डिफरेंस इज की सेम ट्रेजर हंट का एग्जांपल, बट इस बार ट्रेजर हंट का इमेजिन कर लो देयर इज अ मैप व्हिच हैज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द ट्रेजर, बट वो मैप इज टोन इनटू पीसेस. मान लो एक 1000 पीसेस में इट्स टोन एंड इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल. तो अभी यहाँ पे द मेन आइडिया इज कि अगर person A has the maximum pieces of the map, he would be having the most decision making power. तो like जिसके पास भी maximum number of pieces of होते हैं he would make his way through the treasure, उसको treasure मिल जाती है and उसके decisions को actually माना जाता है. So proof of stake makes the race I would say very easy क्योंकि ये ज़्यादा energy consume नहीं करता है और यहाँ पे decision making जो होता है वो उन लोगों के हाथ में होता है जिनके पास major stake होती है. एंड मेजर ब्लॉकचेन्स में ये स्टेक इट इज इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स, जो भी उनके कॉइन्स होते हैं या उनका जो भी काइंड ऑफ करेंसी होती है. इफ
you own majority of them, then you would be directly influencing the future of that particular blockchain. तो आई जस्ट हैव अ क्वेश्चन फॉर यू पीपल. अभी हमने ये समझ लिया है कि प्रूफ ऑफ वर्क होता क्या है एंड प्रूफ ऑफ स्टेक होता क्या है. तो जस्ट इमेजिन कि अगर यू आर सीईओ ऑफ अ कंपनी, ठीक है, ब्लॉकचेन कंपनी के सीईओ, तो व्हाट वुड यू चूज, प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक? सो लाइक जस्ट यू कैन टाइप योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स. So just let's make it interactive. So what would you choose? Proof of stake or proof of work? Okay, any other answers? Hey everyone, kindly consider yourself as the CEO of any kind of company and think. Don't be afraid to think you will be a CEO in future. Just imagine. Okay. Okay, So we proof have. of stake, proof of Yes, keep stake. keep going, everyone. Okay, proof of stake. I guess you guys are well equipped and knowledge about the present trends. That's why everyone is choosing proof of stake. Proof of work, okay. Proof of stake again. Okay, so for the people who are considering proof of work, तो what is your main reason? It could be कि आपका सिस्टम ज़्यादा सिक्योर होना चाहिए. It's like you're hiring बहुत सारे bouncers to guard your treasure, right? जैसे कि जितना ज़्यादा उनको हराना एफर्ट स्टफ उतना ज़्यादा सिक्योर इज योर सिस्टम. Yeah, but I would say drawback of this is it is very slow. The process gets very slow. So it's like you can consider this situation as of tortoise in the race. धीरे चलो but safe चलो. And दूसरी तरफ जो majority proof of stake सोच रहे हैं, you are kind of correct, I would say. It's like if your main concern is not security, if your main concern is energy waste नहीं करना है, and if you want efficient and fast responses, then proof of stake would be your friend, I would say. So but totally the decision is कि what is your main priority of your company. क्या आपको सिक्योर वाला सिस्टम इज योर मेन प्रायोरिटी और एफिशिएंट वाला सिस्टम इज योर मेन प्रायोरिटी. तो उन दो वो चीज़ों को कंसिडर करके यू विल हैव टू टेक योर फाइनल डिसीजन. अगर मान लो इफ आई एम द सीईओ ऑफ अ गेमिंग कंपनी, आई वुड गो विद प्रूफ ऑफ स्टेक. जैसे कि बिकॉज इन अ गेमिंग प्लेटफॉर्म माई मेजर कंसर्न इज फास्ट एंड एफिशिएंसी, राइट? Yeah, you are kind of correct, but sometimes it get very difficult to implement both at the same time. वो बहुत ज़्यादा difficult हो जाता है if you're trying to include both of the consensus in your company, I would say. And like on the other hand, proof of work ऐसे companies में काम करता है जहाँ पे you're dealing with transactions and money related matters, क्योंकि वहाँ पे security का बहुत ज़्यादा issue होता है. तो वहाँ पे proof of work would be kind of more better to go for the choice. So यहाँ तक do you have any doubts still here in the consensus, or we can move ahead? Yeah, I guess we can move ahead. Yeah, so till now we have seen what is web3 and what is blockchain, but now let's move on to the most important part of web3. I would say this is something on which the whole of the web3 is dependent, which is decentralization. So this is kind of the bookish language, I would say, कि जो यहाँ पे दिया हुआ है. It is basically the transfer of control of an activity or an organization to several local officers. तो यहाँ पे दो पिक्चर्स दिए हुए हैं. So the blue one is basically the pictorial representation of a centralized system, and on the other hand जो orange color का diagram है, it is a decentralized system. So now to understand it more better, imagine फिर से you and your friends are playing cricket, और मान लो इसमें एक पर्सन ऐसा है जो सब कुछ रूल सेट करता है, and imagine if he is biased towards the other people, so decisions that are taken at the end kind of would be unfair, and वो पूरे एक्टिविटी या जो आपका पूरा गेम है उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट कर सकता है. If it's a correct decision, it's well and good, but if it's biased and if it takes a wrong decision, it affects the whole game and the kind of experience that you get while playing. तो ये वाला सिचुएशन इज बेसिकली द सेंट्रलाइज सिस्टम. तो इसमें एक सेंटर पॉइंट जो है वो सब कंट्रोल करता है.
अब सोचो लाइक अगर वो बंदा बीच में नहीं होता, लाइक इफ ही इज रिमूव्ड एंड सारे जो बाकी मेंबर्स है जो गेम में खेल रहे हैं, दे कम टुगेदर एंड मेक रूल्स कि ओके विल प्ले लाइक दिस, विल प्ले लाइक दिस, अगर ये वाला लाइन हिट होता है तो विल गिव देम दिस पॉइंट्स. सो लाइक इफ यू आर सेटिंग अप रूल्स लाइक दैट, देन दैट इज अ डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम, जिसमें इट्स लाइक सबको इक्वल पावर होती है एंड सबको इक्वल वॉइस रेज करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है. So like let's compare decentralized and centralized systems. So basically central systems में it's like सब कुछ एक जगह पे ही होता है. जैसे कि आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी मान लो, जो आपके इंटरनेट प्रोवाइडर का मेन ऑफिस होता है, अगर वहाँ पे कुछ इशू हो जाता है, देन होल ऑफ योर इंटरनेट गेट शट डाउन, राइट? बट अगर मान लो इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन अ सेंट्रलाइज सिस्टम, इफ यू गो ऑन टू अ डिसेंट्रलाइज सिस्टम, तो अगर एक भी ऑफिस पे कुछ भी हो जाता है, देन द रेस्ट ऑफ द ऑफिसेस आर नॉट अफेक्टेड बाय इट. सो बाय दिस इवन योर इंटरनेट इज नॉट अफेक्टेड. सो विच वन वुड यू प्रेफर कि किसी और की गलती की वजह से आपकी चीजें अफेक्ट हो रही है या डिसेंट्रलाइजेशन? तो लाइक ऑब्वियसली मैं तो डिसेंट्रलाइजेशन ही प्रेफर करूंगी. एंड डिसेंट्रलाइज सिस्टम्स में सब अलग अलग जगह से काम करते हैं, लाइक अ रिमोट टीम वेयर एवरीवन इज काइंड ऑफ वर्किंग फ्रॉम होम. इफ यू हैव सीन मेजॉरिटी जो वेब3 कंपनीज होते हैं, दे डोंट हैव एनी ऑफिस, दे वर्क फ्रॉम होम. अगर इफ एनीवन हैज बीन, अगर इस कुछ चीज का पता है तो यू वुड बी सीइंग दैट कि वो वर्क फ्रॉम होम होता है मेजॉरिटी ऑफ द जॉब्स. तो इसमें लाइक दे डोंट नीड अ बिग ऑफिस या ये सब चीज़ों की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती है. तो द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इज अ सिंगल पॉइंट कभी फेलियर की तरफ लीड नहीं करता है. अगर एक सिस्टम डाउन हो जाता है तो भी नेटवर्क स्टिल चलता रहेगा. इट्स लाइक अ रिले रेस. एक बंदा अगर गिर जाता है तो दूसरा टीममेट ही पिक्स अप द बैटल एंड कंटिन्यूज द रेस. इट इज काइंड ऑफ सिमिलर विद द डिसेंट्रलाइज सिस्टम्स. तो लेट्स टेक अ रियल लाइफ एग्जाम्पल. इमेजिन आपके फेवरेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लेट्स से इंस्टाग्राम, सडनली शट डाउन हो जाता है. रिसेंटली हुआ भी है, आई गेस ड्यूरिंग दैट उनका प्री वेडिंग जब हुआ था अंबानी वगैरह का, उस टाइम सर्वर डाउन हो गए थे एंड टिल मेनी आवर्स आई गेट वी वर नॉट एबल टू कनेक्ट विद पीपल ऑन इंस्टाग्राम, राइट? सो इवन अब इमेजिन करो कि आपके ऐसे कुछ सेंसिटिव डेटा इंस्टाग्राम पे है, लाइक कुछ फोटोज या कॉन्वर्जेशन विद सम अदर पीपल और ऑन द इंस्टाग्राम. जब वो डाउन हो जाता है तो इवन यू गेट अ फीलिंग, राइट, इज माई डेटा इवन सेफ देयर, राइट? सो बट इफ इमेजिन यू आर ऑन अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विच इज टोटली डिसेंट्रलाइज्ड. अगर वो एक सिस्टम फेल भी हो जाता है, स्टिल योर डेटा इज वेरी सेफ देयर, ठीक है? एंड उसके बाद लाइक या से अगर कोई भी पार्ट फेल हो जाती है तो यू डोंट हैव टू काइंड ऑफ रियली वरी अबाउट इट. बट अब सवाल ये आता है कि डिसेंट्रलाइजेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? इट्स वेरी सिंपल. क्योंकि इसमें पावर आपके हाथ में होती है. लाइक आप अपने डेटा के ओनरशिप ले सकते हो. लाइक यू हैव द टोटल अथॉरिटी एंड द कंट्रोल ऑफ योर ओन डेटा, कि हु कैन यूज योर डेटा, इन विच पर्पसेस यू कैन यूज योर डेटा. लाइक इफ यू हैव सीन, आपको ऐसे नॉर्मल कॉल्स आ रहे होते हैं ना कि लाइक डू यू वांट टू परचेज दिस लैंड, ये हमारे पास ये स्कीम है. हाउ डू यू थिंक दोस पीपल आर गेटिंग योर डेटा? ये क्वेश्चन कभी ना कभी आपके दिमाग में आया ही होगा कि आई वोंट इवन नो, मतलब कहाँ कहाँ तुम्हारी डेटा शेयर हो रही है. लाइक यू जस्ट रैंडमली अगर किसी शॉपिंग मॉल में यू आर जस्ट गिविंग आउट योर बिल, वहां पे दे आस्क फॉर योर नंबर, राइट, फोन नंबर लेते हैं, लाइक देन दे शेयर इट टू मेनी अदर पीपल फॉर मनी. दिस इज लाइक बिग बिजनेस, आई वुड से. डेटा जो भी है, इट प्लेस अ वेरी क्रूशियल रोल एंड इट्स अ बिग बिजनेस दैट्स हैपनिंग नाउअडेज. एंड कई बार इसके वजह से people do fall into scams. But if it's a decentralized system, it's 100% guarantee कि you would definitely know where your data is going, who has access to your data, and you can also control कि कौन आपके डेटा को यूज कर सकता है. So it's like totally, it's up to your wish and it's on your control. तो लाइक आज के टाइम में तो सब कुछ डिजिटल हो ही रहा है, राइट? तो अपने डेटा और आइडेंटिटी का कंट्रोल तो अपने हाथ में होना ही चाहिए. लाइक दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन. ठीक है, कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ? Let's talk about a very interesting topic of Web3, which is rapidly growing, and this is decentralized finance. So, Suna, like, did anyone hear about this before? What is decentralized finance? कभी सुना होगा नाम, नहीं भी सुना तो इट्स स्टिल फाइन बिकॉज इट्स अ
growing stage, I would say still. Okay. So, like imagine you have to open a bank account. Okay. But in decentralized finance, there is no bank. You can open your bank account, but आपको कोई बैंक की जरूरत नहीं है, कोई ब्रांच की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ जो भी है that is decentralized. So DeFi is basically a movement which has been recreated to surpass the traditional systems, which is like your banks. जैसे कि आपके डेली एक्टिविटीज हो गए फाइनेंस के, लाइक योर लोन्स, इंश्योरेंस, ट्रेडिंग, बट ये सारे अभी ब्लॉकचेन के ऊपर चले जाएंगे इन DeFi. So like it's your financial system is totally under your control. Abhi, let's do a comparison between the traditional finance system and the decentralized finance system. Can we move ahead? Rashika, can you just change the slide? So now, imagine traditional finance system as a big old school बैंक का जो बड़ा बड़ा बिल्डिंग होता है, जहाँ पे आप एकदम लाइक यू हैव टू स्टैंड इन लाइंस, अपने डॉक्यूमेंट्स भरने जाते हो, सब कुछ सेंट्रलाइज्ड है. आपका बैंक का वो जो आपका बैंक है दैट हैज टोटल कंट्रोल ऑन योर मनी, लाइक आपके ट्रांजैक्शंस पे, और आपको इतना वेट करना पड़ता है. एंड इतना टाइम वेट करने के बाद भी दे से काउंटर नंबर 5 पे जाओ, काउंटर नंबर 3 पे जाओ, और इतना होने के बाद भी अगर ज्यादा टाइम हो जाता है दे सिंपली से लंच टाइम के बाद आना. ये तो सबने फेस किया ही होगा. तो लाइक इट्स अभी मिडिल क्लास में ऐसा ना कि अगर कोई बैंक के काम से जाना है, अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, यू हैव टू पुट अ होल डे लीव. एक पूरा दिन वहां पे वेस्ट हो जाता है. मतलब 2 घंटे से पहले तो काम नहीं होने वाला है बैंक में, राइट? बट जो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है, इट्स लाइक योर पर्सनल फाइनेंशियल असिस्टेंट जो 24/7 अवेलेबल होती है आपके मोबाइल में. एंड आप अपने स्मार्टफोन से ही लोन्स ले सकते हो. अभी बैंक से आए हो? नाइस यार, नाइस. या सो व्हाट आई वाज सेइंग, या आपके मोबाइल से यू कैन टेक द लोन्स, यू कैन इन्वेस्ट, एंड ऑल्सो आपके पूरे ट्रांजैक्शंस का जो भी है यू कैन हैव इट विदाउट हैविंग अ मिडल मैन. कोई क्यूज नहीं, ओनली डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द पियर्स. तो ट्रेडिशनल फाइनेंस में आपको डॉक्यूमेंट्स का, लाइक डॉक्यूमेंट्स और उनके अप्रूवल के लिए बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं. तो कई बोलते हैं ना, एक बार पैन कार्ड का कॉपी लेके आओ, आधार कार्ड का कॉपी लेके आओ, अगर पूरे डॉक्यूमेंट सही भी है फिर कुछ ना कुछ बोलते हैं कि आपके साइन गलत है, आपके मम्मी का नाम प्रिंट गलत है, पापा का नाम प्रिंट गलत है. तो इट्स टेक अ लॉट ऑफ टाइम. बट DeFi में ये सब कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू होता है. अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स. तो बेसिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑटोमेटेड, और ऑटोमेटेड एग्रीमेंट होती है जिसपे प्रीसेट रूल्स लिखे होते हैं बिटवीन द टू पार्टीज. एंड जब वो रूल्स एग्जीक्यूट हो जाते हैं तो मतलब जब वो टर्म्स एंड कंडीशंस मीट हो जाते हैं तो जो भी उसके बाद प्रोसेस होता है वो इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो जाता है ऑन इट्स ओन, लाइक यू डोंट हैव टू इंटरवीन देयर. तो अभी आती है सबसे बड़े बात पे, तो विच इज DeFi क्यों चाहिए हमें. कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. So like why should we even kind of care about this very fancy term. So फिर से I would take the example of बैंक अकाउंट, कि वही आपको वेट करना पड़ता है, आपको अपना मनी का एक्सेस नहीं होता है. सो लाइक इमेजिन कि यू आपके सेविंग्स अकाउंट में यू हैव 20 lakhs ऑफ कैश, एंड ऑन अ डेली बेसिस, या आपको कोई ऐसा जरूरत पड़ गया कि आपको 10 lakhs विड्रॉ करना है, यू गो टू द बैंक एंड यू से कि मुझे 10 lakhs दो, मुझे अभी इमीडिएटली जरूरत है और मेरे अकाउंट में ऑलरेडी पैसे पड़े हुए हैं. बट इवन बैंक्स हैव दिस राइट कि एक लिमिट के बियॉन्ड आप निकाल ही नहीं सकते हो एक दिन में. आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द अमाउंट, ऐसा कुछ होता है राइट. इवन इन ATM से हैव कि इतने अमाउंट से ऊपर तो आप ट्रांजैक्शन कर ही नहीं सकते हो, निकाल ही नहीं सकते हो, जबकि वो तुम्हारे खुद के पैसे है यार. अब तुम्हारे खुद के पैसे निकालने के लिए भी तुम्हें इतने ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस पड़ रहे हैं, तो दैट्स नॉट फेयर, राइट? तो अभी ये सोल्यूशन, मतलब ये प्रॉब्लम को हम DeFi से सॉल्व कर सकते हैं. तो लाइक DeFi ऑफर्स यू फाइनेंशियल फ्रीडम और कंट्रोल आपके खुद के पैसों पे. लाइक आपके पास अपने जितने भी फंड्स हैं उसके ऊपर पूरा कंट्रोल होता है. लाइक इट इवन हैपन समटाइम्स कि यू नो अर्जेंट नीड पे यू कैन गो थ्रू इट, यू कैन जस्ट यूज अ DeFi. अर्जेंट नीड पे यू कैन जितना भी पैसा चाहिए यू कैन विड्रॉ दैट. एंड लाइक यू कैन ऑल्सो इमेजिन कि अगर मान लो आप कोई पार्टी देना प्रेफर करते हो लोगों को, ठीक है, तो अगर ट्रेडिशनल फाइनेंस सिस्टम में अगर हम देखें तो इट्स लाइक यूर टेकिंग द अप्रूवल हर एक लोग से कि यार मैं पार्टी अरेंज कर रहा हूँ, लाइक वुड यू वांट टू कम इनटू इट. अगर आपका हाँ है तो तभी आना, वरना नहीं. तो इट्स लाइक अ प्लान पार्टी.
बट DFI से समथिंग सरप्राइज पार्टी, तो लाइक सब कुछ आपके कंट्रोल में है, जो आप करना चाहते हो आप वो कर सकते हो, किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है बेसिकली, दैट्स टोटली अप टू यू. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. Next slide, please. Yeah. So now let's come into the top DFI platforms that are currently present. So इसमें the first one is Uniswap and it's kind of my favorite, I would say. It's a decentralized exchange जहाँ पे आप बिना किसी broker के crypto currencies को exchange कर सकते हो. Like think of it as a eBay of crypto trades, I would say. Like आप खुद अपने trades को control कर सकते हो. And the next famous one is Aave. Like Aave भी एक बहुत ज़्यादा leading platform है जहाँ पे आप आपके जितने भी crypto assets हैं उनको lend और borrow कर सकते हो. It's like a peer to peer banking जहाँ आप बिना किसी बैंक के loans ले सकते हो. एंड द नेक्स्ट वन इज आई गेस इट्स कॉम्पाउंड. ये प्लेटफॉर्म क्रिप्टो एसेट्स के लिए इंटरेस्ट अर्न करने के लिए यूज करते हैं लोग बेसिकली. लाइक आप जितने भी आपने डिपॉजिट करे होते हैं ना क्रिप्टो एसेट्स, तो उनके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलती है. सो लाइक इट्स विन एंड विन सिचुएशन इन द बोथ केसेस. एंड उसके बाद सुशी स्वैप इज ऑल्सो वन ऑफ द लीडिंग वन विच इज लाइक kind of Uniswap ही है, but it's a fun variant of Uniswap, I would say. And the top fifth is Yarn Finance. Like अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट को ऑप्टिमाइजेशन के लिए if you want to optimize your investments, so like you can use this platform. Like you can just think of it as your personal financial advisor, I would say. जो like आपके जो भी आपके इन्वेस्ट करते हो उनको मैक्सिमाइज करने के लिए. So it's all about DFI here. And can we move on to the next slide? So yeah, let's come on to the most interesting topic. इसके बारे में तो सबको नॉलेज होगा ही होगा, which is NFTs, non-fungible tokens. Play. Padmini, you're mute. Okay. Yes, you're audible. Yeah, so here's a QR on the screen. So I just request everyone to please kind of, scan this QR as a quick activity. Like after you have just opened it, just react with a thumbs up so I can know about it. Yeah, okay. So I'm just sharing my screen. Okay, is my screen visible? Yes, it is visible. Yeah, just give me a second. No, no. No, it's not visible, I guess. Yeah, just give me a second. I'm setting it up. Okay. So okay, on your screen, आपको 3 pictures visible होंगे, right? I'm just not able to share my screen here. I don't know why. You're not able to. No, it's not coming. I don't know why. I'll just yeah, I'll just join again. Just give me a second. Okay. Till then, everyone. maybe I'm presenting, that's why she can't. Okay. तो मैं अपनी presentation बंद करूँ? Yes. You can Yes. switch off your presentation. Till then, everyone, you can switch on your camera for a super cool screenshot. We will share this picture of ours of this amazing session on our Now social she media. can share. Okay, great. Anyone, अगर कोई अपना कैमरा ऑन कर सकता है, please. We would like to take a super cool picture. Everyone, please, कैमरा ऑन कर लीजिए 2 मिनट के लिए. इतने में कुछ नहीं होता. Everyone, please switch on your camera so that we can click a picture of this amazing session. Okay. I think 6-7 नहीं करिए, बाकी नहीं करना चाहेंगे.
इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालनी है हमने. ओके, कूल. जिन्होंने करा, so everyone, some poses, any kind of thing. Yeah, okay, can we start again? Okay, yes. Okay, Cool. so ठीक Thank है. you so much. So yeah, in the three pictures that you have here, basically one of them is said to be the most expensive NFT ever to be recorded in history. So I just want you people to guess which one it is, and also what is the price of it. You can just cast your vote there, and later you can just type in the chat box what is the amount that you're thinking. Some people didn't scan the QR code, so if Okay, just give me a second. Can you ask your team to please share the Rishi, PPT? share your screen again of the same QR वाला picture. अगर मैंने शेयर की तो दोबारा इनकी बंद हो सकती है. No worries. Yeah, I like this one. Okay, No sure. worries. Yeah, When just everyone will scan the QR code, then again. And try to wrap up this session like 25 minutes. Okay, yeah, otherwise it will stretch to like. Okay, great. And everyone will be sharing a feedback form with you all so that you can provide your valuable feedback. And as per the responses we'll be getting, we'll send the participation certificate, e-certificate to all of you. So don't go before filling it. And whosoever doesn't scan the QR code, they can scan the QR code now on the count of 10. Okay, then this screen will be closed. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Hurry up, everyone. 4, 3, 2, and 1. Uh, okay, if you didn't scan, no worries. कोई बात नहीं. Rishika, you can switch off your screen. And Padmini, you yeah. So can I share. just request everyone to cast your vote. Which one do you think is the most expensive NFT among the three? Like it is also the expensive NFT ever recorded. And also just put you can just type what do you think is the amount in the chat box. Monkey one, Monkey King, okay. 440 million, okay. So yeah, did everyone cast your vote? Please, I'll just wait for 5 more seconds and then I'll reveal the answer. Okay. So I would say for the people who have kind of voted for the Monkey King, all of you are wrong. All of you are wrong. Yeah, even in the beginning, I thought this would have been the most, expensive ever because like it's so trending nowadays, right? But the correct answer is the moon picture. Like it is actually the most expensive one till now, and the amount is nearly $91.8 million. मतलब तुम इमेजिन कर रहे हो अगर इतना पैसा मेरे पास होता आई कैन हैव अ डुएट परफॉर्मेंस ऑफ जस्टिन बीबर एंड रिहाना इन माय प्री वेडिंग विच विल बी इन दुबई इतने पैसों से लाइक रियली आई डोंट इवन अंडरस्टैंड मतलब इस एनएफटी में ऐसा है क्या कि इतना ज्यादा अमाउंट के लिए लोगों ने खरीदा है आई लिटरली डोंट नो आई एम सॉरी तो जस्ट इस लिंक में ऐसे ही रहना आई वुड से so I'm just stopping my screen now. Can you just put on the PPT again? Yeah, sure. Yeah. You can just move on to the next screen. This is done already. So now let's move on to the core part of what is an NFT, why is it used, etc., etc. So basically, like imagine you have a special and one of a kind trading card, okay? Like जैसे एक ultimate, लेकिन ना जो एक limited edition के Pokemon cards आते थे बचपन में याद है तुम लोगों को? वो एक स्पेशल कार्ड्स होते थे हर एक कार्ड की एक अलग सी वैल्यू होती थी आई डोंट रिमेम्बर द गेम जिसपे रेसलर्स होते थे WWF के
मुझे वो गेम याद नहीं आ रहा है what मुझे वो गेम याद नहीं आ रहा है what it is exactly. Yeah, तो kind of like that. It's like कि NFTs are like your digital collectibles. जैसे कोई digital artwork हो गया, कोई music हो गया, और even kind of real, virtual real estate. Like हर एक NFT का unique value होता है, और ये सब blockchain पे record किया जाता है. So like आपको proof मिलता है कि वो NFT जो है वो आपका, like you are the owner of that NFT and वो असली है. So, like, to make things more clear, let's take an example. Like, we'll compare rupees and NFTs, okay? So, now imagine I have 200 rupee notes, okay? And one of which I have withdrawn it freshly from a bank in Himachal Pradesh. And the other note, I have taken it from a bank in, say, Hyderabad. Okay, so what do you think? Like, would there be any issue if like I swap the notes and I kind of use them in different states? Do you think that would cause any problem? Like in making in exchanging that currency? So like no, right, obviously. Like अगर मैं कहीं से भी withdraw करूँ, I can use it in any state throughout India, so that won't literally cause me any problem. Not possible, maybe, I guess. Okay. So like yeah, I can use any currency note up, like जब तक वो rupees में है, I can use it anywhere in India. And अगर दोनों की value same ही रहेगी, it's not like the note that I've taken from Himachal Pradesh is costing 100 rupees, while the note that I've taken from Telangana, it is costing 200 rupees. ऐसा तो कुछ नहीं है. So like it has the same value, but it is kind of opposite in the case of NFTs. हर एक NFT का एक unique value होता है, and it has its own certifications. Like अब क्योंकि ये सब digital है, and अगर मान लो आपके पास कोई NFT है, you store it in your digital wallets. And हर एक NFT का एक unique digital certificate होता है, so which kind of shows your proof of ownership and also its authenticity of the NFT. So like traditional collectibles जो होते हैं वो आपको maintain करना पड़ता है, like you have to dust it, you have to insure it, like insurance करना पड़ता है, and also you have to take a very good care of them क्योंकि वो खराब हो जाते हैं. So like but क्योंकि NFT is digital है, you won't need to do all of these. But a question पे आती है कि like why did even this concept of NFT come into existence? So मतलब क्या यूनिक है ऐसे कि एनएफटी इतना ज्यादा हाइप चला हुआ है आजकल इसमें? तो लाइक इमेजिन आपका एक फेवरेट आर्टिस्ट है और उसकी एक एक्सक्लूसिव डिजिटल आर्टवर्क आई है लाइक इन द मार्केट. ये एनएफटी आपको एक्सेस देता है, लाइक वीआईपी पास जो बस आपके पास है. तो लाइक एनएफटीज प्रोवाइड यू द डिजिटल ओनरशिप ऑफ दैट पर्टिकुलर एल्बम. और मतलब क्योंकि ये एक डिजिटल एसेट है तो यू कैन ओन इट. एंड अगर कोई पूछे कि लाइक यार कैसे तुम बता सकते हो लाइक यूर ओनर ऑफ दिस एनएफटी, यू कैन जस्ट शो देम द ओनरशिप. So like it's not a really big issue until and unless it is recorded on the blockchain. So let's take another example. मान लो कि जो आपका ट्रेडिशनल आर्ट मार्केट है, तो वहां पे आप एक पेंटिंग ले रहे हो, ठीक है, यू आर बाइंग अ पेंटिंग, बट यू स्टिल हैव अ क्वेश्चन इन योर माइंड वेदर दिस पेंटिंग इज ओरिजिनल और नॉट. क्योंकि आजकल तो इतने फर्जी कॉपीज बनते हैं हर एक के. ठीक है, पिकासो पेंटिंग तो एक ही बना था, बट हर एक के घर में अब तो दिखता ही है. मतलब एक ओरिजिनल तो एक ही है बट उसकी कॉपीज बहुत है. बट इन केस ऑफ एनएफटीज ओरिजिनल एक ही है और उसकी कोई कॉपी ही नहीं बन सकती है बिल्कुल भी. लाइक द ओरिजिनल हैज इट्स ओन ऑथेंटिसिटी. एंड we'll come to the use cases of NFTs. So basically one of the biggest uses of NFT is in digital art. So like ये NFT का सबसे बड़ा एंड सबसे पॉपुलर यूज केस है. तो लाइक आर्टिस्ट अपने डिजिटल आर्टवर्क को टोकनाइज करते हैं, लाइक दे हैव देयर यूनिक ओनरशिप. वो सेल और ट्रेड करते हैं देयर जो भी उनका आर्टवर्क है उस चीज में. एंड नेक्स्ट इट वन ऑफ द other use cases, virtual real estate. So like imagine a virtual world. तो लाइक यहाँ पे आप लैंड, बिल्डिंग्स और एनी अदर प्रॉपर्टी बाय कर सकते हो. एंड ये लैंड जो है आपके एनएफटीज के फॉर्म में होता है. तो लाइक इन मेनी गेम्स यू सी राइट, जैसे वो भी होता था एक बिल्डिंग का गेम, क्या था वो, जहाँ पे यू क्रिएट योर ओन स्पेस, जहाँ पे आप खुद की एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो. लाइक वी कैन यूज एनएफटीज देयर. एंड लाइक नेक्स्ट इट्स ऑल्सो यूज इन म्यूजिक इंडस्ट्रीज नाउ डेज. लाइक आर्टिस्ट अपने म्यूजिक को एज एनएफटी पब्लिश कर सकते हैं. सो दे हैव या माइनक्राफ्ट गेम. So like वहाँ पे भी it's a totally virtual real estate, right? So like you're buying some land there, you're building your things out there. So coming to music, so अगर कोई artist है, he can release his music as an NFT, so he would have the exclusive access to that, and he can trade जैसे उनको मर्जी है.
तो लाइक कमिंग टू द फ्यूचर ऑफ एनएफटी, तो इट्स लाइक वेरी इमर्जिंग ट्रेंड, ये बहुत रैपिडली इवॉल्व हो रहा है. तो लाइक इफ it's not just a trend, like it's shaping the future of digital ownership, I would say. So like एक दिन आपके digital collectibles, like virtual real estate और exclusive content सब कुछ आपके पास ही होगा आपके virtual world में. So like any doubt regarding NFTs? Can we move ahead? Can you please change the slide, please? Manik, can you please change the slide? Rishika, can you please change the slide? Yes, the slide has been changed. Actually, Padmini, your screen is freezed. Is it good? But just a second. Everyone, Bijoy and Abhishek, there are many sites where we can create and mint our own NFTs. Nowadays, everyone is generating images from AI and converting them into NFTs. But still, not every NFT has their own values. It depends on the authenticity and creativity of your artwork, and you find many platforms where you can create your own NFT. Okay, you want to buy or sell NFTs. Okay, it's a great thing. Uh, Hello, is my voice audible? Yes, yes. Oh, yes. So there are many platforms like there are Nifty Gateway and OpenSea and Axie Infinity, and you'll find plenty of platforms. But the like, what is the purpose of buying or selling of NFT? Are you an artist or something? It's a great thing you can do, but I'm not into much into this NFT buying or selling, so I don't have much knowledge on this. Yeah, is it better now? Hello, am I audible? Yes, yes, you're audible. Yeah. Yes, now it's better. Can I connect? Sorry, can I start? Yes, yes. So Bijoy is asking Web3 and NFT different thing. Yeah, both of them are different. NFT is like a use case of Web3, I would say. Like Web3 is a total big entity, and NFT is a kind of use case of it. Okay, now let's move on to DAO. So basically, DAO stands for Decentralized Autonomous Organizations. So by the name itself, you can kind of understand like organizations है, decentralized है और autonomous है. So like imagine you run a club जहाँ पे members अपनी token holdings के through participate करते हैं. Okay. So like जैसे हर member के पास कुछ tokens होते हैं जो उनके वोटिंग पावर डिसाइड करता है. तो यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का यूज होता है टू डिसाइड लाइक जैसे वोटिंग कंप्लीट हो जाएगी और जितना भी वो जो भी डिसीजन पे मेजोरिटी वोट्स आते हैं उस डिसीजन के अकॉर्डिंग द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट जो भी द फर्दर प्रोसीडिंग्स होते हैं. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल एक डॉ में जो फंड्स अलॉकेट होते हैं राइट अलॉकेट करने के लिए जो ओके लाइक यू कैन जस्ट कैसे समझाओ इट्स लाइक ओके लेट्स एज्यूम इट इन दिस वे. ठीक है, एक डाउ है जो फंड्स अलॉकेट करने के लिए बना हुआ है. लेकिन हम एक एक्टिविटी करते हैं, आई गेस दिस वुड बी बेटर. या जो आपने क्यूआर स्कैन करी है ना उसी पे सेकंड क्वेश्चन पे जाइए प्लीज. विल बी गेटिंग अनदर स्लाइड देयर. नहीं नहीं इन द क्यूआर वंस इन द क्यूआर शीट इटसेल्फ. NFT वाली जिसमें NFT में QR था. या प्लीज स्कैन दिस वंस अगेन. तो यहाँ पे यू हैव एन सेकंड क्वेश्चन. तो बेसिकली द एक्टिविटी हियर इज की लेट्स एज्यूम हम सारे एक डाउ के पार्ट हैं. ठीक है, एंड हमारा डाउ का मेजर काम यह है कि वी रिलीज फंड्स टू
मतलब स्कॉलरशिप्स के लिए भी रिलीज फंड्स या प्रोजेक्ट्स के लिए. तो अभी वी हैव टू कलेक्टिवली मेक अ डिसीजन कि एक प्रोजेक्ट हमारे पास आया है, शुड वी काइंड ऑफ गिव आवर फंड्स टू इट और नॉट. ठीक है, तो लेट्स डिसाइड फॉर दैट. तो अभी यहाँ पे एक वर्चुअल स्टडी स्पेस का एक प्रोजेक्ट हमारे सामने आया है एंड वी हैव टू डिसाइड कि इसके लिए हम फंड्स रिलीज करना है कि नहीं. तो यू कैन जस्ट कास्ट योर वोट, लाइक डू यू वांट टू रिलीज फंड्स और यू डोंट. यू कैन जस्ट कास्ट योर वोट हियर and I'll just share my screen. So yeah, I'll just keep it on for more 5 seconds. We'll just have to wrap it early. So yeah, okay, fine. So now we can see that 20 people have agreed for releasing the funds while one didn't. So obviously the majority is agreed. So now as the member of DAO, I'm releasing the funds for that project. It's as simple. Like it's also transparent, right? कि कितने लोगों ने vote किया है, किसकी मर्जी है मतलब to release the funds and not to release. So this is how basically a DAO works. यहाँ पे collectively decisions होते हैं and if you are kind of a part of a DAO, your votings would be through the coins या जो भी उनके वहाँ पे वो होते हैं. Yeah, kind of democratic I would say, but in a decentralized manner. तो now let's take a मतलब ये थोड़ा मतलब fascinating सा topic लग रहा है. Like you would have been thinking कि does it even kind of it's applicable in the real life. So like there are many famous DAOs which are present. Like one of them is MakerDAO. This is kind of a DAO which is actually managing the BIA coin, stable coin. ठीक है, members यहाँ पे vote करते हैं on important decisions. Like जैसे कि interest rates कितने होने चाहिए, system upgrades के बारे में. तो every voter is counted here to make the ultimate decision. And next one of the next famous DAO is Uniswap DAO. तो it's also a very famous decentralized exchange है. उसके ऊपर भी एक डाउ है. ठीक है, तो यूनिस्वैप टेक जो भी टोकन होल्डर्स होते हैं लाइक दे वोट ऑन द प्रोटोकॉल अपग्रेड्स और फ्री स्ट्रक्चर्स पे. तो बेस्ड अपॉन द वोटिंग्स पीपल दे टेक अप द डिसीजन कि वट एवर उनको वो जो काम करना है. एंड मेजोरिटी ऑफ द ब्लॉकचेन्स जो होते हैं दे हैव देयर ओन डाउ. जैसे हमने पहले भी डीएफआई में आवे सुना था, राइट? वी हैव डिस्कस्ड अबाउट आवे. Yeah, it's also a DFI. Uniswap is also a DFI. As I've mentioned, every blockchain and a DeFi platform has its own DAO. like अगर मान लो कोई तुम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख रहे हो बट अपेरेंटली उसको तो तुम बस इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो कि या इफ इट्स दिस डिसीजन यू हैव टू एग्जीक्यूट दिस वन. सो लाइक एवरी चेन हैज इट्स ओन डाओ. ठीक है, तो so now let's move on to the future of DAO. So like it's pretty bright. So like many people it is kind of understanding that it's a power of community driven governance, right? हम देख सकते हैं कि काफी सारे ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो सारे इसी मॉडल को आजकल प्रेफर करते हैं. तो लाइक डाओ काइंड ऑफ कॉन्सेप्चुअल मॉडल है बट इसके बेनिफिट्स भी उतने ही हैं लाइक ट्रांसपेरेंसी, इक्वालिटी और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट. सो लाइक कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. So yeah, now ultimately coming to the future potential of Web3. So like अब सब ये सोच रहे होंगे कि ये सब हमने सिर्फ कुछ सालों में अचीव कर लिया जितना भी अभी हमने डिस्कस किया है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है. Web3 लाइक Web3 का जो असली पोटेंशियल है इट इज टू बी अनलिस्ड मोर. जैसे लाइक वी हैव डिस्कस Web3 का फ्यूचर बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है. लाइक साथ में कुछ चैलेंजेस भी आते हैं. जैसे यू आर स्टार्टिंग विद अ थिंग तो ऑब्वियसली चैलेंजेस होते ही है. Like one of the few challenges that is kind of by standing the potential of Web3 is इसका scalability, इसकी education, इसके energy efficiencies. So these are some kind of hurdles that are coming in path of the growing of Web3, I would say. So like what is the role of India in Web3 future? So like अगर हम बात करें कि इंडिया की, तो ये बिल्कुल सही वक्त है टू ग्रो इन द फील्ड ऑफ Web3. सो लाइक इंडियन गवर्नमेंट अभी अभी ब्लॉकचेन के फील्ड्स में बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं. तो लाइक अभी रिसेंटली आईआईटी खड़गपुर इज काइंड ऑफ बिल्डिंग अ ब्लॉकचेन सिस्टम फॉर सिग्नल मैनेजमेंट, आई गेस. सो लाइक यू कैन इमेजिन कि कितने ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स इस पे हो रहे हैं एंड लाइक कितना ज्यादा फंड्स रिलीज हो रहे हैं इस चीज पे. एंड इवन इफ यू हैव हर्ड, अगर सुना है तो आईआरसीटीसी जो वेबसाइट है, राइट,
Indian Railways ka. They have kind of gifted its users NFTs as a reward for Holi, I guess. NFTs publish दिया था उन्होंने users को for the occasion of Holi. तो ऐसे बहुत चीजें it's growing rapidly. So and like coming, can I have the next slide? Yeah, okay, I'll just continue. And like coming to the topic ki abhi how is like how can we obtain opportunities? Like Web3 is very vast. तो उसमें opportunities भी उतनी ही हैं. But आजकल the education about opportunities is not that much. So I'll just say you a few opportunities. So the first one is majorly hackathons, ठीक है? So like participate in as many hackathons as you can. जितने हो सकते उतने participate करो, be it offline or online. अगर offline तुम participate कर रहे हो, it's even more better. And like if you are kind of interested offline में, so I would advise everyone to kind of participate in Eth India, which will be happening in the month of December. अभी होगा, I guess registration start नहीं हुआ है उस चीज के. It's like even if you're a Web3 developer or you have no link with Web3, like a normal web developer भी हो या आप कोई app developer हो या AI/ML करते हो, still you can visit and participate in Eth India. Like it has a global scope. आप वहाँ पे बस जाओ, you can find teammates there and you can make a huge team. And उसके बाद भी one of the main reason I am saying Eth India is कि अगर आप वहाँ पे जीत जाओगे, like you don't have to ask parents for money. इतना ज़्यादा amount मिलता है वहाँ पे if you win. Like तुम्हारा पॉकेट मनी भी वहाँ पे काइंड ऑफ हो ही जाएगा. एंड लाइक देयर आर मेनी हैकाथॉन्स, जैसे कि सोलाना हैकर हाउस होता है एंड लाइक रिसेंटली हैकर हाउस गोवा भी हुआ था. सो लाइक दीज हैकाथॉन्स ऐसा होता है कि जो ब्लॉकचेन्स के ओनर्स होते हैं कई बार सीईओस वो खुद वहाँ पे आते हैं to promote their product. So like if you have any idea, you can directly pitch to those owners. So like अगर आप normally कोई applications वगैरह fill out कर रहे हो, तो it's like वो बहुत stages जाके पार होके फिर उनके टीम के पास जाती है. But in a hackathon, you go there, you pitch out yourself directly to the people from the team. So like if they are interested, they will invest in your project. Like they can even give you kind of opportunities दे सकते हैं interns का या full time role भी. And one of the beauty of Web3 is यहाँ पे आपको कोई डिग्री की जरूरत नहीं है. लाइक अगर नॉर्मल सॉफ्टवेयर डोमेन में इफ यू वांट टू वर्क होता है ना कि यू हैव टू हैव कंप्लीट योर बीटेक डिग्री इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और नॉट, इट्स अ कंपल्शन देयर. बट इन Web3 space, if you want to be a full time employer, yeah, so if like you want to be a full time employee in the Web3 space, you don't actually need to have any degree. Just need to have knowledge of languages such as Solidity, Rust, etc. तो बस अगर आपको ये चीज आता है, you can start being a full time employee in any of the Web3 company, I would say. And the next option to search for opportunities is basically to connect via LinkedIn. सीधा मैसेज कर दो, एक जस्ट मेक अ सॉर्ट ऑफ लिस्ट ऑफ पीपल हु आर लाइक फाउंडर्स ऑफ ब्लॉकचेन या जितने भी ब्लॉकचेन की कंपनीज है उनके जो फाउंडर्स होते हैं, जो सीईओज होते हैं या पीपल हु आर इन द हायर लेवल ऑफ दीज कंपनीज, just send out a very well crafted message to them कि ये मेरी expertise है, I've done like I've worked on these projects, this is my work experience. So like it would be very great if you can let me know if there are any opportunities present with you. So like many of the people do get back to you. So like this is how I got my intern in graph, I would say. Like I just texted out directly to the CEO of the protocol there and I backed the intern there. So like this is kind of a very easy way. You don't have to fill out any application, you don't really have to go through the hassle of interviews and all. So it's kind of a very easy way to go there. So like yeah, these two are my top priorities. And third one is there's a website called remote.co. Like it lists out the latest opportunities and the updated opportunities whatever that are present in the Web3 space. Like it is very updated, you get throughout the world. वहाँ पे जितने भी अभी Web3 space में जितने भी opportunities throughout the world present है, it is listed out there. And fourth one would be to be very active in communities. Like community is one of the major source जहाँ से आपको ये information पता चल सकता है. So I guess I have this much itself to share. So like any other doubts or can we close this? My seniors told me that mostly you have to work on like on 80% on 20% deployment. Yeah, Avish, it is kind of true.
like, yeah, maybe the numbers don't really are true, but you'll have to kind of learn full stack development if you want to be an blockchain engineering, I would say. And for the smart contract developments, you can kind of learn the languages like Solidity. It is majorly used. And if you're a beginner in Web3, I would really advise to start with Solidity because it's like kind of very similar with JavaScript. So like if you have knowledge of JavaScript, you can start writing smart contracts in Solidity itself. And if you want to go on the higher level, or like if you want to work on chains such as Solana, you can start with Rust. But yeah, learning Rust is kind of a bit difficult. So I would advise people to start with Solidity actually. So can you suggest good communities you would like to suggest in Web3 domain? And also some popular Web3 events that we can be part of, developers and professionals. Okay, coming to communities, every blockchain has its own community. जैसे Solana has its Solana, उनकी खुद की community है, Hackeros भी है, and Ethereum has its own community. So you can just try being a part of, yeah, Solana का super teams भी है, which is like it is present in 7 different countries, I guess. Like you can try applying, be a part of it. So like there you get multiple opportunities. Like you get the material to learn, you get gigs there, like part-time gigs भी मिल जाते हैं आपको super team में, like if you're a part of super team. And coming to popular events, Indian Blockchain Week is going to happen. You can trying being a part. And as I've already mentioned, please do go to Ethendia. It's a wonderful opportunity. And can you tell us where you get these updates and what's happening in the world? You just have to be very active in the communities to get this information, like no other way out. So, any other questions? So, like, even there's a Twitter thread, a Twitter account, sorry, which kind of post about the, like, which tweets about the events that are happening in the blockchain system. So, you can try following them, like, they're very updated. Remove above message and comments. I'm sorry, I didn't get that. So, do you have any other questions or can we wrap it up here? So Nilesh is asking how to start from scratch. See, if you want to start from scratch, I would say firstly be very well equipped with web development. So, like if you know web development, it's kind of very easy to come onto this space, I would say. So, like, early start with web development, then later you can start learning smart contracts, ki, how to write them, how to integrate, and etc. So, like, you have pretty good YouTube channels too. Like, very good online material is accessible nowadays. So Avish, yes, you can switch on your mic, Avish, if you have a doubt. Am I audible? Yeah. Yeah, so I was asking like आपने अभी डिसेंट्रलाइज्ड के बारे में कुछ की पॉइंट्स बताए थे हमें स्लाइड्स में. Yeah. उसमें 4-5 पॉइंट्स थे काफ़ी, लाइक हम अपना कोई मिडिल मैन नहीं होगा, हम अपना अकाउंट खोल सकते हैं, हम अपने लाइक अकाउंट के खुद मालिक हो सकते हैं, जो हमें ट्रांजैक्शन करनी हमारी मर्जी होगी, लाइक वो Hmm. चीज़ अच्छी थी. बट यहाँ जो हम प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं उसका क्या फ़ायदा, उसका क्या फ़ायदा हो रहा है? हम ठीक है, हम उसके यूज़र्स हैं, हम ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, बट जिन्होंने ये चीज़ें बनाई हैं वो भी तो कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होंगे ना, उनको भी कुछ इनकम लाइक या जनरेट करना होगा, तो व्हाट उनका क्या मोटिव है इसमें? So yeah, basically whenever you do a transaction, अगर मान लो आप 100 रुपए का ट्रांजैक्शन कर रहे हो, देयर इज अ टर्म कॉल्ड गैस फीस. ठीक है, तो वो थोड़ा ट्रांजैक्शन अमाउंट कट होता है. तो लाइक इफ यू आर काइंड ऑफ ट्रांजैक्टिंग 100 रुपीज, तो वो पूरा 100 रुपीज नहीं जाता है. अ वेरी माइनर पार्ट ऑफ इट गेट्स कट एज द गैस फीस. तो दैट इज काइंड ऑफ द इनकम ऑफ द प्लेटफॉर्म्स. तो लाइक इट इज द काइंड ऑफ इट इज अ रीजन. अब आजकल जो प्लेटफॉर्म्स है, दे आर ट्राइंग टू काइंड ऑफ मिनिमाइज देयर gas fees ताकि to onboard many people onto the chain or the platform. ओके. Ayana has a question. What is the salary for freshers in India? Salary for freshers, it's kind of really it's variable, I would say.
it is kindly totally depend upon the chain in which you're working and also the role that you're opting for. But yeah, it does kindly, I guess, 18 something. Not sure about it actually. So, like, if you're into the Web3 space, you don't really need to be a developer. You can be a developer at, 18K. sorry, Hello everyone, I am sharing. Right, no salary, so salary कितनी थी? 18 क्या? 18 salary क्या? K lakh. sorry. You're not, Manish, your voice is not clearly audible. We are not able to get it. You can type in the chat section. And everyone, I'm sharing you with a feedback form with you all. Kindly please fill it and how you like this session. And there are certain things. Kindly please fill it, and we'll be giving you certificates as per the entries we'll get on that. So don't forget to fill it. And yes, if anyone have any kind of questions, can you please ask? We'll wrap up at 6:15. Uh, Jashan says skills that should be possessed. For what, Jashan? Can you yeah, I give really us didn't some more get it. context? Nilesh is asking what is the pathway for Web3. I think Nilesh, Padmini has already tell you. First master full stack, then you can learn Solidity or Rust and can start building smart contracts. That's it. You'll become a Web3 developer. I guess no more questions. What is the most? Everyone, please fill the feedback form. What is the most fun part for you about Web3? Yeah, the most fun part for me is I would say community. So like interacting with people, getting new people on board. It's something that I really enjoy. And yeah, taking sessions obviously. Yes, Manish. Mm. If you have something to ask, you can ask. Otherwise, you can also type in the chat section. And everyone, kindly don't forget to fill the feedback form. I'm sharing you the same link again. It will help us improve our future sessions. It would means a lot if you'd fill the feedback form. And I guess there are no more questions. So we'll wrap up the session. Uh, Uh, Thank you so much, Vijay. Manik yes, yes, is my voice is clear. Maybe Manish is typing in the chat, so we have to wait for him. Yeah, sure. okay, okay, Manish. You can. We'll be waiting for you. And Bijoy is asking the Twitter handle. There is a Web3 meetups named a handle named Web3 meetups. You can follow it, and you'll get updated about the events about Web3. So yeah, basically the salary is kind of advocate. It kind of like if you're an experience, you would be getting kind of 1 lakh per month, I guess. And if you're a developer, you'd be getting more than that. So like I guess minimum is 1 lakh per month in any profession in Web3. If you're a full-time working man, you can get it. And like if you are working, like if in India, it's very much limited, the opportunities of Web3. But if you go to the Gulf countries, right, like the rise of Web3 is very much there. So like that's why people kind of, work for foreign countries being in India there. Do you travel a lot in Web3 domains like sponsor trips and all?
Unfortunately, no, because I'm a college student at present and my college doesn't give me NOC to roam. So I have to be in college. So yeah, but normally if you are present in any chain, so they do sponsor your trips. The thing is, I'm not able to avail that because of my college. So let's wrap up the session as it's already over time. Thank you so much, everyone, for coming, and thank you so much, Padmini, for sharing us all your knowledge and experiences. And thank you so much for coming. It means a lot to us. Thank you so much. Thank Thank you so you. much for this amazing session. Thank you so much. Bye bye. Bye.